ऑल राइट। लास्ट सेशन में हमने नंबर रेंजेस एंड कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स को एक दूसरे से लिंक किया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, विच इज क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग्स। अब फर्स्ट 3 स्टेप्स हमने अकाउंट ग्रुप्स के लिए किए थे। फोर्थ स्टेप से हम बिजनेस पार्टनर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग्स क्रिएट करने के लिए गो टू SPRO, SAP रेफरेंस IMG, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, SAP बिजनेस पार्टनर, अगेन बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग्स एंड नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग्स। बिजनेस पार्टनर में पहले हम नंबर रेंज डिफाइन करेंगे एंड देन एक ही स्क्रीन पे हम ग्रुप्स भी क्रिएट करते हैं एंड इस नंबर रेंज को असाइन भी करते हैं बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग्स के साथ। अगर आपको ट्रांजैक्शन कोड्स देखने होंगे इसके लिए तो गो टू एडिशनल सेटिंग्स, अगेन क्लिक ऑन एडिशनल सेटिंग्स, डिस्प्ले की, IMG एक्टिविटी। यहां पर और एक कॉलम आ जाएगा। To define number ranges, transaction code is BUCF, execute, intervals. I'm just copying this. I'll paste it here. And account groups के जगह मैं BP groupings एंटर कर दूंगा। अब जब हम अकाउंट्स पेएबल कर रहे थे तब हमने फॉर अकाउंट ग्रुप, फॉर सिंगल अकाउंट ग्रुप हमने सिंगल BP ग्रुपिंग डिफाइन किया था। If see, just 1 minute. ओके, अगर यहाँ पे देखो हमने डोमेस्टिक वेंडर फॉर रॉ मटेरियल क्रिएट किया था एंड BP ग्रुपिंग्स में भी हमने बिजनेस पार्टनर फॉर रॉ मटेरियल्स क्रिएट किया था। यानी कि फॉर वेंडर 1 वी क्रिएटेड बिजनेस पार्टनर 1, फॉर वेंडर 2 वी क्रिएटेड बिजनेस पार्टनर 2। ये क्लियर है? यस सर। ओके, अब वाइल क्रिएटिंग कस्टमर हम या तो वो सेम कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं या और एक कंसेप्ट होता है जो एक्चुअली कंपनीज में फॉलो होता है।
हमने वेंडर्स के लिए सिंगल बिजनेस पार्टनर फॉर सिंगल अकाउंट ग्रुप वाला फॉलो किया था, बिकॉज एसएपी हमें एक अकाउंट ग्रुप मल्टीपल बिजनेस पार्टनर को असाइन करने नहीं दे रहा था, क्योंकि हमें कुछ एरर आ रहा था। इसलिए हमने सिंगल बिजनेस पार्टनर क्रिएट किया था फॉर सिंगल अकाउंट ग्रुप। अब अकाउंट ग्रुप फॉर कस्टमर में, लेट्स से दिस इज योर डोमेस्टिक कस्टमर A001। अब इस डोमेस्टिक कस्टमर के लिए हम आगे और बाइफरकेशन कर सकते हैं। अकाउंट ग्रुप हमने डोमेस्टिक कस्टमर क्रिएट किया था। अब इस डोमेस्टिक कस्टमर को हम डोमेस्टिक कस्टमर फॉर प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर HNMO, एंड डोमेस्टिक कस्टमर फॉर सर्विसेज भी क्रिएट कर सकते हैं, HNMO। मैं इनको सेम कलर दे रहा हूं ताकि ये समझने में इजी जाए। ओके, फॉर डोमेस्टिक कस्टमर वी क्रिएटेड डोमेस्टिक कस्टमर फॉर प्रोडक्ट्स एंड डोमेस्टिक कस्टमर फॉर सर्विसेज। यानी कि डोमेस्टिक कस्टमर का मीनिंग ये होता है कि लोकल कस्टमर्स, वो कस्टमर्स जो हमारे सेम कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इफ यू आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, आवर कस्टमर्स आर ऑल्सो इन इंडिया, उन कस्टमर्स को हम डोमेस्टिक कस्टमर बोलेंगे। अब उन डोमेस्टिक कस्टमर्स को कंपनी या तो कोई प्रोडक्ट सेल कर सकती है, या तो कोई सर्विसेज सेल कर सकती है, या दोनों चीजें सेल कर सकती है। तो हमने यहाँ पे कस्टमर्स को और बाइफरकेट किया है बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? रोहित, आपको क्लियर है? एक बार फिर से बताओ। हमने अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट किए थे फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स एंड फॉर फॉरेन कस्टमर्स, करेक्ट? हाँ सर। अब इस डोमेस्टिक कस्टमर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी थी फॉर कस्टमर्स जिनको हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। प्रोडक्ट्स, अब अगर होंडा मोटर्स कंपनी है तो होंडा मोटर कंपनी का जो आउटपुट प्रोडक्ट होगा वो बाइक्स होंगे, राइट? होंडा मोटर बाइक्स मैन्युफैक्चर करेगी और उन बाइक्स को बेचेगी। दैट विल बी अ प्रोडक्ट फॉर द कंपनी। तो हमने एक कस्टमर बनाया, एक कस्टमर की कैटेगरी बनाई जहां पे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, एंड हमने सेकंड कैटेगरी कंसिडर की जहां पे हम सर्विसेज सेल करते हैं। अब इन प्रोडक्ट वाले कस्टमर एंड सर्विसेज वाले कस्टमर्स को हमने बीपी ग्रुपिंग्स में क्रिएट किया, ठीक है? डोमेस्टिक कस्टमर फॉर प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक कस्टमर फॉर सर्विसेज। समझ आया? हाँ सर। ओके। अब सिमिलर टू अकाउंट ग्रुप्स, जैसे हमने अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट किए थे, उनकी नंबर रेंजेस क्रिएट की थी,
वैसे ही हम बीपी ग्रुपिंग्स क्रिएट करेंगे एंड उसके नंबर रेंजेस क्रिएट करेंगे। अब दिस इज जस्ट फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स। लेट्स से अब फॉरेन कस्टमर है। फॉरेन कस्टमर के लिए अगेन वी विल क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस कैटेगरी। Foreign customer for products HNMO and foreign customer for services HNMO। ठीक है, जैसे हमने डोमेस्टिक कस्टमर क्रिएट किया था एंड उसके लिए दो कैटेगरीज क्रिएट किए थे, सिमिलरली हमने फॉरेन कस्टमर के लिए भी दो कैटेगरीज क्रिएट किए हैं। अब जब हम एसएपी में एग्जांपल देखेंगे तो वी विल जस्ट टेक डोमेस्टिक कस्टमर्स, बट इफ यू वांट यू कैन टेक फॉरेन कस्टमर्स एज वेल। एंड इफ वी टॉक अबाउट these account groups, कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स, वेंडर अकाउंट ग्रुप्स, तो एक कंपनी में मल्टीपल टाइप के अकाउंट ग्रुप्स होंगे। नाउ हमने दो एग्जांपल्स लिए थे। फर्स्ट वाज डोमेस्टिक और लोकल कस्टमर्स। नेक्स्ट विल बी फॉरेन कस्टमर्स। इनके अलावा वी कैन टेक वन टाइम कस्टमर्स, देन इंटर कंपनी कस्टमर्स, नेक्स्ट कैन बी इंटर कंपनी कस्टमर्स, देन वी कैन से एम्प्लॉय कस्टमर्स, यानी कि वो एम्प्लॉयज जो हमारे कस्टमर्स भी है। ठीक है, कंपनी में ऐसे मल्टीपल अकाउंट ग्रुप्स होंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कस्टमर्स का एग्जांपल लिया है। Now let us create this in SAP. Transaction code is BUCF। यहाँ पे हम कस्टमर नंबर रेंजेस डिफाइन करेंगे। Let us check for free number range। यहाँ पे हम A8 and A9 ले सकते हैं। After A7, A8 and A9 is not there. So for number ranges,
A8 and A9. Go to free intervals. अब यहाँ पे जब नंबर सिलेक्ट करोगे तो ट्राई करो जितना इजी नंबर आपको दिखे उतना इजी नंबर आप सिलेक्ट करना, लाइक दिस वन, 41 all zeros to 4100 100. This is A8. Select it and continue. अब हम यहाँ पे नंबर रेंज क्रिएट कर रहे हैं, 41 all zeros to 4100. ओके जस्ट अ सेकेंड, ये 100 तक ही फ्री है। डिलीट दिस। हम 300 2001 इस नंबर रेंज को पिक करते हैं। A8 सिलेक्ट, कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम इसको एडिट कर देंगे, 300201 से लेके 3002100 तक। ठीक है, हमने 100 रेंजेस लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 100, लास्ट की 3 डिजिट्स देखना। We will create one more number range for service customers. कोई डाउट है ऋषिकेश आपको? Save this, go back, again click on intervals. This is A9. Continue, 3100201 से लेके 3100300 तक। We will create this number range, 3100201 to 3100300. This is A9. Okay, ये दो नंबर रेंजेस हमने क्रिएट किए। आफ्टर क्रिएटिंग इट, click on save. The changes were saved. Now
Go back. Again back. Click on Define Groupings and assign number ranges. New entries. अब यहाँ पे हम बीपी ग्रुपिंग्स डिफाइन करेंगे। जो डोमेस्टिक कस्टमर था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन डोमेस्टिक कस्टमर फॉर प्रोडक्ट्स एंड डोमेस्टिक कस्टमर फॉर सर्विसेज। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स अब क्रिएट होंगे। गिव अ कोड डोमेस्टिक कस्टमर फॉर products DCPR. I'm giving it HNMO. Long description is domestic customer for product for HNMO, and number range is A8. We will define one more grouping, that is domestic customer for services. Again, domestic customer for services HNMO. Number range will be A9. Press enter. It's saying that an entry already exists with the same key. Instead of DCSE, we will try DCSR. Enter. दो groupings create हो गए. First is DCPR, second is DCSR. ये समझ आया कि हमने groupings कैसे create किया? यस सर। Okay. सर इसमें सर मैं बस मतलब एक पूछना था, हम्म. डीसीपीआर वगैरह ये जो आपने किया तो वो मतलब कौन से नंबर को रजिस्टर किया था? जो कोड हमने क्रिएट किया उसकी बात कर रहे हो? यस सर। यहाँ पे एक लॉजिक यूज किया है. D stands for domestic, C stands for customer, and PR stands for product. Similarly, services में D stands for domestic, C stands for customer, S stands for SE सर्विस। stand for service. But SE अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने नेक्स्ट लेटर लिया, that is R. So domestic ओके सर। customer for products, domestic customer for services. ओके। इतना करने के बाद सेव दिस. Go back. अब हमने BP groupings and assign number ranges वाला स्टेप कंप्लीट किया. Next step is define tolerance groups.
अब वेंडर एंड कस्टमर के लिए सेम स्क्रीन पे टॉलरेंस ग्रुप्स डिफाइन होते हैं। सो वी डू नॉट नीड टू डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप्स अगेन, हम सिर्फ एक व्यू लेते हैं उसका। ट्रांजैक्शन कोड इज /NOBA3। Our company code is HNMO. डबल क्लिक। अगर यहाँ पे आप इसका टाइटल देखोगे, कस्टमर और वेंडर टॉलरेंसेस, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द वैल्यूज, तो हम फिर से टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। We will go to the next step. Create GL accounts. GL accounts क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है? FS00 FS00। चेक कि कंपनी कोड आपका है या कोई और कंपनी कोड है। अगर कोई और कंपनी कोड हो, डिलीट दैट एंड ऐड योर कंपनी कोड। अकाउंट्स पेबल में हमने अकाउंट्स पेबल फॉर डोमेस्टिक वेंडर्स क्रिएट किया था। अब सिमिलरली हमें अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए भी एक फोल्डर क्रिएट करना है। गो टू द टेबल्स। Accounts receivable will be your asset. अब accounts receivable में we have accounts receivable for domestic, accounts receivable for foreign, and intercompany and one time. We will create for domestic and foreign. Account number is 141, all zeros. Click on create. 141, all zeros. Continue. Company code will be HNMO. यहाँ पे GL अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया। नाउ अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए हम GL अकाउंट टाइप में क्या सिलेक्ट करेंगे? बैलेंस शीट Account group will be, अकाउंट रिसीवेबल and this is डोमेस्टिक accounts receivable, domestic, control A, control C, and paste it here. Go to control data tab. यहाँ पे select reconciliation account for account type. क्या आना चाहिए? कस्टमर And sort key will be 002 नहीं। For this account, what we will do is हम sort key 031 देंगे। See this one. कस्टमर नंबर, यानी कि जो रिपोर्ट्स हमें डिस्प्ले होंगी वो एज पर कस्टमर नंबर डिस्प्ले होंगे। ओके सर नेक्स्ट इज क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। यहाँ पे वी विल गिव G067। G067 इज यूज्ड फॉर रिकंसिलिएशन अकाउंट। अब ये जो अकाउंट्स पेबल डोमेस्टिक है वो हम एज रिकंसिलिएशन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वी विल यूज G067 एंड फॉर नॉर्मल अकाउंट्स वी विल यूज G001। ओके सर
select this, press enter or click on save। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल डोमेस्टिक, ये अकाउंट क्रिएट हो गया। We will create one more account or we will copy this account from 1400 to 14 all zeros 1. Click on continue. Instead of domestic, we will give foreign। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी एंड क्लिक ऑन सेव। ठीक है, हमने दो अकाउंट्स क्रिएट किए, वन फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स, वन फॉर फॉरेन कस्टमर्स। अब अकाउंट्स रिसीवेबल, इज इट अबाउट परचेजिंग और इज इट अबाउट सेल्स? सेल्स। सेल्स, राइट। तो हमें सेल्स के लिए भी एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ सेल्स इज आवर इनकम और इज आवर एक्सपेंस? इनकम सर, नॉन ऑपरेटिंग। Domestic sales, we will create domestic sales for Agra. 301 all zeros. Sales is operating income. मैंने कहीं पे इसको नॉन ऑपरेटिंग मेंशन किया था क्या? नहीं सर। Click on create 301 1 2 3 4 5 all zeros. Continue. GL account number आ गया. Go to type description. What will be GL account type? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम। Account group will be सेल्स डोमेस्टिक। सर आपने कोई ये ग्रुप भी अलग अलग टाइप के मतलब समझा कि मुंबई के लिए अलग ग्रुप, उसके चेन्नई के लिए अलग ग्रुप है सर, डोमेस्टिक के लिए भी अलग अलग ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा? डिपेंड करता है कि कंपनी या क्लाइंट क्या चाहता है उसमें। अब डेफिनेटली क्लाइंट को जितना हो सके उतना बाइफर्केशन चाहिए होता है, राइट? जैसे हाँ, जितना हो सके उतना इन डिटेल्ड उनको सारी चीजें चाहिए होती है। तो yes, मोस्टली क्लाइंट विल यूज दिस ऑप्शन। okay, हर स्टेट के लिए अलग अलग अकाउंट चाहिए अपने को। यस, ओके सर। दिस इज डोमेस्टिक सेल्स फॉर आगरा। गो टू कंट्रोल डेटा टैब। अब यहां पे हम रिकंसिलिएशन अकाउंट सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इफ यू सी दिस, यहाँ पे चार ऑप्शंस है: एसेट्स, कस्टमर्स, वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स रिसीवेबल। इसमें कहीं पे सेल्स वाला ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स सेल इज नॉट अ रिकंसिलिएशन अकाउंट। सॉर्ट की वी विल गिव 001, यानी कि सेल्स अकाउंट के लिए जो भी लाइन आइटम्स हमें दिखेंगे वो एज पर पोस्टिंग डेट दिखेंगे।
create bank interest will be G001, general assignment, and save this. अभी शायद इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब आप 2 या 3 कंपनी कोड्स क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने जीएल अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट किया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक कस्टमर, डोमेस्टिक कस्टमर के लिए जब हमने जीएल अकाउंट क्रिएट किया FS00 में, तो हमने 2 अकाउंट्स क्रिएट किए एज रिकंसिलिएशन अकाउंट। Correct? One was for foreign customers, one was for domestic customers. अब डोमेस्टिक कस्टमर के लिए हमने क्रिएट किया था 141 all zeros, 141 all zeros, and services में भी 141 all zeros. Correct? This will be reconciliation account for domestic customers. Similarly, for foreign customers, we created accounts receivable foreign 141 all zeros 1, 141 all zeros 1, and here also 141 all zeros 1. करेक्ट? हमने रिकंसिलिएशन अकाउंट का कंसेप्ट अकाउंट्स पेबल में इन डिटेल समझा था कि जो भी वैल्यूज हम अकाउंट्स पेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल में एंटर करते हैं, वो वैल्यूज रिकंसिलिएशन अकाउंट के थ्रू जनरल लेजर अकाउंटिंग में फ्लो करती है। एंड दीज आर 2 रिकंसिलिएशन अकाउंट जो हम अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए यूज कर रहे हैं। We also created domestic sales for Agra. Now, next step. Link business partner to vendor. SPRO, SAP reference IMG. Just change this from vendor to customer. Cross application components. ये जितने भी पाथ मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे पाथ्स हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में मेंशन है। Go to master data synchronization. Now this is customer vendor integration. Open this folder. Go to business partner settings. जब हमने वेंडर क्रिएट किया था, हमने सेटिंग्स फॉर वेंडर इंटीग्रेशन सिलेक्ट किया था। अब हमें कस्टमर इंटीग्रेशन करना है, देयरफॉर वी विल सिलेक्ट सेटिंग्स फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन। Go to field assignment for customer integration, assign keys, and define number assignment for direction BP to customer.
अब यहाँ पे गो टू पोजीशन, हमने ग्रुपिंग्स क्रिएट किए थे। व्हाट वर आवर ग्रुपिंग्स? बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग्स में हमने क्या क्रिएट किया था, क्या कोड डाला था? DCPR डीसी और DCSR. DCPR एंड DCSR। यहाँ पे कहीं पे भी DCPR एंड DCSR ये नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे कोई एंट्री क्रिएट नहीं की है। We will click on new entries. First grouping is DCPR, domestic customer for products, HNMO. Second grouping is DCSR, domestic customer for services. This column is account group. For domestic customers हमने कौन सा account group select किया था, create किया था? ए ए नहीं, account group, not number ranges. A001 and A002. हम अब सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए वी विल यूज ओनली A001 फॉर these two customer types. A001, A001, HNMO domestic customer. Let's see if SAP allow us to do this. Press enter. अब short name and account group में name check करो. This is for product customer, this is for services customer, and both of them belong to same account group, which is domestic customer. Click on save, click on continue. Data was saved. अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस क्रिएट अ बिजनेस पार्टनर। हमने यहां पर एक पॉइंट लिखा था कि वी विल फर्स्ट क्रिएट अकाउंट्स रिसीवेबल मास्टर डेटा एट बिजनेस पार्टनर लेवल एंड देन एक्सटेंड दिस डेटा टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग कस्टमर। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। टू क्रिएट बिजनेस पार्टनर्स, go to the transaction code BP. B stands for business, P stands for partner. Enter. अब यहाँ पे हम एक्चुअल कस्टमर्स क्रिएट करेंगे। Now we have two categories, customer for products, second is customer for services. Our company code is Honda Motors. Honda मोटर का जो प्रोडक्ट है दैट इज अ बाइक। अब ये बाइक होंडा मोटर्स किन कस्टमर्स को बेच सकती है? कोई कंपनीज को बेच सकती है, यानी कि कोई शोरूम को बेच सकती है, होलसेलर, या कोई इंडिविजुअल कस्टमर को बेच सकती है। We will take an example of a showroom. Let's say BU Bhandari.
and let's say KK Motors. These two are customer for products. Now, for services, we can take an example of service centers. So, Aero, Honda, service center, and let's say Honda, Big Wing, सर्विस सेंटर। ठीक है, ये सिर्फ हम एक रफ एग्जांपल ले रहे हैं। नाउ आउट ऑफ दिस we will create BU Bhandari as product customer and we will create Aero Honda Service Center as service customer. अब ऐसे ही कंपनी कैन हैव अ बिग लिस्ट ऑफ द कस्टमर। हमने सिर्फ 2 कस्टमर्स लिए फॉर प्रोडक्ट्स, कंपनी कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स। फर्स्ट लेट अस क्रिएट कस्टमर फॉर प्रोडक्ट्स। अब इसके लिए जो बीपी ग्रुपिंग हमने दी थी, दैट वाज डोमेस्टिक कस्टमर प्रोडक्ट्स HNMO। गो टू SAP। अब हमें जो कस्टमर क्रिएट करना है, वी आर क्रिएटिंग इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लिक ऑन इट। अब मैंने आपको बोला था कि एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, विच इज we will first create accounts receivable master data at BP level, business partner level, and then extend it to financial accounting customer. अब to create customer master data और to create vendor master data, हम transaction code यूज करेंगे BP। अब इस BP transaction code में जो हम BP रोल सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज बाय डिफॉल्ट ऑल जीरोस विच इज फॉर बिजनेस पार्टनर। यानी कि हम पहले हमारा मास्टर डेटा बिजनेस पार्टनर लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं। सेम पॉइंट यहां पे भी लिखा है, वी विल फर्स्ट क्रिएट अकाउंट्स रिसीवेबल मास्टर डेटा एट बीपी लेवल। गिव बिफोर दिस ग्रुपिंग्स। अब ग्रुपिंग्स हमने क्रिएट किया था DCPR। ग्रुपिंग में ड्रॉप डाउन ओपन करो एंड टाइप द इनिशियल लेटर, फर्स्ट लेटर विच इज D। अब यहाँ पे सारे वो ग्रुपिंग्स आ गए जो डी से स्टार्ट होते हैं। आर ग्रुपिंग इज DCPR। सिलेक्टेड, दिस विल बी कंपनी। नाउ नेम फॉर दिस कस्टमर इज BU भंडारी। स्ट्रीट, लेट्स से give any name। House number is 45। Postal code, let's say 41001। City is Mumbai।
country IN, and region MH. PO box address is also 411001. Company postal code also 411001. Language is English. इतने डिटेल्स एंटर कर लिए, देन क्लिक ऑन सेव. ओके. बिजनेस पार्टनर 300201 क्रिएटेड. अब ये जो 300201 है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट. जब हमने बीपी ग्रुपिंग्स क्रिएट किया था, तब हमने नंबर रेंज क्रिएट किया था 300201 से लेके 30022100 तक. इस पॉइंट में हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर दिया. We will create accounts receivable master data at business partner level. अब next part में and then extend this data to financial accounting customer. यानी कि अब इस डेटा को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा ऑन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कस्टमर रोल. Change in BP role. Click on drop down. To create customer in financial accounting, we use FLCU00. Click on it. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको कंपनी कोड का एक टैब आ जाएगा. क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे आपका कंपनी कोड एंटर करो, HNMO, एंड प्रेस एंटर. फर्स्ट डिटेल विच इट इज आस्किंग इज रिकंसिलिएशन अकाउंट. हमने दो रिकंसिलिएशन अकाउंट्स क्रिएट किए थे जीएल मास्टर डेटा में. वन वाज 141 ऑल जीरोस, सेकंड वाज 141 ऑल जीरो वन. यहाँ पे भी हमें दो जीएल, सॉरी, यहाँ पर भी हमें दो रिकंसिलिएशन अकाउंट्स आ रहे हैं, 141 all zeros, 141 all zeros 1. Now this is our domestic customer, so we will select accounts receivable domestic, and sort key will be 031. Press enter. यहाँ पे descriptions आ गए दोनों के. Now click on save. This was our master data part. अब configuration data हो गया, master data हो गया. What is the next step? अकाउंटिंग आवाज नहीं आ रही है आपकी. अकाउंटिंग से Next step will be transactional data. अब ट्रांजैक्शनल डेटा में हम कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करते हैं पहले. लेट अस नॉट टाइप इट हियर.
अब तक जितना हमने किया उतना क्लियर है आपको? हाँ सर। कस्टमर में हमने सिर्फ एक ही कस्टमर क्रिएट किया था. Let us create one more customer for services. अगेन जो सर्विस कस्टमर है उसको हम पहले बिजनेस पार्टनर रोल पे क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल एक्सटेंड इट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग कस्टमर. बिफोर गोइंग इनटू दिस डिटेल्स, मेक श्योर कि आप यहाँ पे करेक्ट ग्रुपिंग एंटर करो. फॉर सर्विस कस्टमर वी विल यूज DCSE. नहीं, वी विल यूज, ओके हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था क्या? हाँ सर, फॉरेन और किया था ना अपन। नहीं, सर्विसेज के लिए सी दो दो ग्रुपिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे. डोमेस्टिक कस्टमर सर्विसेज HNMO एंड डोमेस्टिक कस्टमर सर्विसेज HNMO. सिर्फ इनके कोड्स अलग अलग है. ये हाँ, ये जो CR वाला है ना, ये अपन ने क्रिएट किया था, DSCR वाला। ओके, ये ऊपर वाला अपन ने क्रिएट किया, ऐसी वाला। ठीक है. क्लिक ऑन, लाइक सिलेक्ट दैट ग्रुपिंग. अब टाइटल विल बी कंपनी. नेम इज एरो होंडा सर्विस सेंटर. Give the street name. Let's see. Southern Elite. 345. Postal code is 410043. मैं कोई भी रैंडमली डिटेल्स ले रहा हूँ यहाँ पे. City, let's say it is Bangalore. Country IN. And region, region will be Karnataka. PO box address also I'll keep same. Company postal code same. Language will be English. Click on save. Okay. Business partner 3100201 created. डोमेस्टिक कस्टमर फॉर सर्विसेज के लिए हमने नंबर रेंज दी थी 3100201 से लेकर 3100300 तक. तो इसमें फर्स्ट बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो गया. नाउ वी विल एक्सटेंड दिस टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग कस्टमर रोल. FLCU00. This is a code for customer financial accounting. Select it. Go to company code tab. Company code is HNMO. Select it and press enter. . . 。 . 。 . 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
reconciliation account was 141, all zeros. And sort key will be 031. Press enter key. Descriptions आ गए. Click on save. अब बिकॉज हमने रिकंसिलिएशन अकाउंट को बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा में असाइन किया है, इसीलिए जो अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल का डेटा होगा या जो स्पेसिफिक कस्टमर्स का या वेंडर्स का डेटा होगा वो इस रिकंसिलिएशन अकाउंट के थ्रू जनरल लेजर में फ्लो करेगा. क्लिक ऑन सेव. Changes have been saved. Now what we will do is हम एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं. कॉन्फ़िगरेशन एंड मास्टर डेटा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. एज पर आर प्लान हमने दो कस्टमर्स क्रिएट किए, वन फॉर प्रोडक्ट, वन फॉर सर्विसेज. This and this. Next step is transactional data. जब हमने वेंडर ट्रांजैक्शंस किए थे उस टाइम पे हमने वेंडर इनवॉइस पोस्ट किया था, वेंडर पेमेंट पोस्ट किया था एंड वेंडर क्रेडिट मेमो पोस्ट किया था, राइट? इनवॉइस डॉक्यूमेंट, पेमेंट डॉक्यूमेंट एंड क्रेडिट मेमो, ये तीन डॉक्यूमेंट्स हमने देखे थे अकाउंट्स पेबल में. सिमिलरली अकाउंट्स रिसीवेबल की ट्रांजैक्शनल डेटा में we will post customer invoice, next is customer payment document, and third is customer credit memo. Customer credit memo is used for sales return. ये तीन डॉक्यूमेंट्स क्लियर है? यस सर. रोहित, आपको क्लियर है? हाँ सर. ओके, लेट अस गो टू SAP. अब कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड इज FB75. वेंडर इनवॉइस पोस्ट करने के लिए इट वाज FB, आई एम सॉरी, कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड इज FB70. वेंडर इनवॉइस के लिए इट वाज FB60. Go to FB70, enter. Now यहाँ पर enter customer invoice. This is for customers. Change your company code. Continue. Search icon पे click करो. Give your company code and press enter.
यहाँ पे हमें 2 कस्टमर्स दिख रहे हैं। लेट अस क्रिएट फॉर प्रोडक्ट कस्टमर व्हिच इज BU Bhandari. Invoice date 27 September 2025. Now let's say example. Let us say BU Bhandari. Sorry. Let us say Honda Motors sold 10 pieces of Honda Hornet to BU Bhandari at rupees 1 lakh. अब इसमें अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? Honda Motors account debit to be number. श्योर, Yes. रिपीट करो एंट्री वापस. Honda Motors account debit to be number. Not Honda Motors, BU Bhandari account, because our customer is BU Bhandari. BU Bhandari account debit for rupees 10 lakh, right? 10 pieces of rupees 1 lakh each, which is 10 lakh rupees. To sales revenue account, and this will get credit. Credit 10 lakh. करेक्ट है ये अकाउंटिंग एंट्री? या कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. Okay. Now this will be customer invoice. जब हम कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करेंगे तो ये अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए. Back to SAP. Amount will be 1 lakh. I'm sorry. Amount will be 10 lakh. Customer invoice. GL account will be domestic sales Agra. Amount in document currency, I'll just put star. यानी कि जो वैल्यू हमने यहां पर दी है वही वैल्यू SAP यहां पर भी कॉपी करेगा. यहाँ पे एक टेक्स्ट का कॉलम है. कॉपी दिस टेक्स्ट एंड पेस्ट इट हियर.
इतना होने के बाद क्लिक ऑन आई एम सॉरी इतना होने के बाद प्रेस एंटर। एरर आ गया हमें, इन कंपनी कोड HNMO नंबर रेंज 02 इज मिसिंग फॉर द ईयर 2025। यानी कि कस्टमर इनवॉइस के लिए जो नंबर रेंज यूज होती है विच इज 02, ये नंबर रेंज हमने क्रिएट नहीं की है हमारे कंपनी कोड के लिए। ऋषिकेश, आपने उस दिन पूछा था कि इफ वी डू नॉट क्रिएट दिस नंबर रेंज हमें डॉक्यूमेंट पे एरर मिलेगा क्या? तो दिस इज द एरर विच वी विल गेट। अब नंबर रेंजेस क्रिएट करने के लिए व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड? इट इज FBN1। एंटर। कंपनी कोड HNMO, सिलेक्ट, क्लिक ऑन इंटरवल्स। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पे कहीं पे भी नंबर रेंज 02 क्रिएटेड नहीं है। क्लिक ऑन दिस आइकॉन, इंसर्ट लाइन, नंबर रेंज गिव इट एज 02 ईयर 2025। फ्रॉम नंबर में अब हमने लास्ट जो नंबर रेंज क्रिएट की थी दैट वाज 7001 टू 8, नो, दैट वाज 8001 टू 9000। यानी कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10,000 नाउ। 10,000 टू 11,000। प्रेस एंटर। दिस इज आवर नंबर रेंज। अब यानी इसका मतलब ये है कि जो पहला कस्टमर इनवॉइस पोस्ट होगा, द इनवॉइस नंबर और द पोस्टिंग इनवॉइस नंबर शुड बी 10,000। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 10,000। क्लिक ऑन सेव, कंटिन्यू, changes were saved, go back to invoice posting and click enter. Now simulate. अकाउंटिंग एंट्री क्या हो रही है यहाँ पे? करेक्ट, BO भंडारी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सर लेकिन एक मिनट सर, जो अकाउंट का वापस से ओपन करना आपकी आवाज तो बहुत लो आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। हेलो, आवाज आ रही है सर अभी आपको? बोलो। तो यहाँ पे देखो, मतलब पोस्टिंग फीस जो है, यहाँ पे जो सब क्रेडिट वाला है उसमें पोस्टिंग फी 50 बराबर आया, तो 201 आया ऐसे। सॉरी ऋषिकेश, आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। हेलो, आवाज आ रही है सर अभी आपको? आवाज आ रही है पर बहुत लो आवाज आ रही है। आपने एक मिनट ईयरफोन्स नहीं सर, लगाए क्या? एयरफोन एयरफोन से लगाओ, मैं डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करता हूँ इसमें। ओके। रोहित, आपको समझ आया हमने क्या किया अभी? एक हेलो। बार फिर से बताओ सर। क्या नहीं समझा? तो एंट्री एंट्री फिर से बताओ। हेलो सर, आवाज क्लियर है आपको? अभी भी आवाज लो आ रही है आपकी। एक सेकंड रुक जाओ, रोहित का एक डाउट है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद आपके डाउट पे जाते हैं। ओके रोहित, लास्ट सेशन में हमने अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल। ये अकाउंटिंग एंट्रीज थी। जब हम कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री विल बी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। ये सेम एंट्री मैं नीचे कॉपी करता हूं।
ठीक है, ये अकाउंटिंग एंट्री क्लियर है आपको या इसमें भी डाउट है? नहीं सर, उसमें नहीं है। ठीक है, अब हमने कस्टमर क्रिएट किए थे, राइट? वी क्रिएटेड बीयू भंडारी एंड वी क्रिएटेड एरो होंडा सर्विस सेंटर। दो कस्टमर्स हमने क्रिएट किए। अब जब एससीपी में अकाउंटिंग एंट्री हुई तो ये जो कस्टमर है दैट इज जस्ट replaced by the name of the customer which is BU भंडारी। एंड ये जो सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है, हमने सेल्स के लिए अलग अलग सिटीज डिफाइन किए थे। अगर आप जीएल मास्टर डेटा लिस्ट देखोगे, यहाँ पे हमने आगरा, चेन्नई, मैंगलोर एंड हैदराबाद डिफाइन किया था। क्रिएशन के टाइम पे हमने डोमेस्टिक सेल्स फॉर आगरा वाला अकाउंट क्रिएट किया था, इसीलिए एससीपी में डोमेस्टिक सेल्स फॉर आगरा अकाउंट क्रेडिट हुआ एंड बीयू भंडारी इज डेबिटेड। बीयू भंडारी इज द कस्टमर, डोमेस्टिक सेल्स फॉर आगरा इज सेल्स अकाउंट, यानी कि कस्टमर अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है हाँ सर। ऋषिकेश, हाँ सर। आपका क्या डाउट था? आवाज आ रही है सर आपको पूरा? हाँ, अभी आ रही है। ये था मतलब नॉर्मली एक नॉर्मल डाउट था कि ये जो अपने को पोस्टिंग की है तो उस हिसाब से जो 50 का आया है वो क्रेडिट का वो मतलब रिफंड कर दो, लेकिन ये 01 कैसे आया आपको पोस्टिंग के लिए? दिस इज पोस्टिंग की फॉर कस्टमर। अगर यहां पर देखोगे 01 इज फॉर कस्टमर डेबिट, 15 इज फॉर कस्टमर क्रेडिट। तो 01 इसलिए आया बिकॉज कस्टमर अकाउंट डेबिट हुआ था। आई विल मेंशन इट हियर। फॉर कस्टमर डेबिट posting key is 01, customer credit posting key is 15. Similarly, document type for customer invoice, document type is KR. I'm sorry, not KR. For customer invoice, document type will be DR. D stands for customer and R is invoice. For customer credit memo, it will be DG. And for customer payment, it will be DZ. अगर डी को आप लेटर के से रिप्लेस कर दो तो वो वेंडर्स के लिए हो जाएगा। के आर विल बी फॉर वेंडर इनवॉइस, के जी विल बी फॉर
vendor credit memo, and KZ will be for vendor payment. समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब हमने वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर दिया। हम सभी अब हमने कस्टमर इनवॉइस पोस्ट कर दिया। नाउ लेट अस सी कि हमने 10 पीसेस बीयू भंडारी को सेल किए थे। इस इन 10 पीसेस में से लेट्स से 2 पीसेस में कुछ फॉल्ट निकला एंड 2 पीसेस बीयू भंडारी ने हमें रिटर्न कर दिए। अब अगर सेल्स रिटर्न की एंट्री हो रही है तो कौन सा डॉक्यूमेंट पोस्ट होना चाहिए? क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो। रिवर्स एंट्री। करेक्ट, रिवर्स एंट्री होगी जिसके लिए हम कस्टमर क्रेडिट मेमो पोस्ट करेंगे। दिस विल बी सेल्स अकाउंट और सेल्स रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू बीयू भंडारी अकाउंट क्रेडिट। सिनारियो हमने लिया था कि बीयू भंडारी returned 2 pieces of Honda Hornet। अगर 2 पीसेस रिटर्न किए थे तो अमाउंट विल बी रुपीज 2 लाख। हियर ऑल्सो रुपीज 2 लाख एंड इस केस में बीयू भंडारी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब for customer invoice we use FB70। For customer credit memo we will use FB75। एक बार हम लाइन आइटम रिपोर्ट चेक करते हैं फॉर जीएल एंड फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल। अब जीएल का चेक करना होगा अगर लाइन आइटम डिस्प्ले ट्रांजैक्शन कोड इज FBL। थ्री एंड Okay, all items, click on search icon। यहाँ पे हम 2 अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। वन इज अकाउंट्स रिसीवेबल डोमेस्टिक एंड सेकंड इज सेल्स फॉर आगरा। क्लिक ऑन कॉपी एंड एग्जीक्यूट। नो आइटम सिलेक्टेड। Why it is showing no items selected?
Okay. Accounts receivable, domestic, and this is for sales. Copy. Noted and spark items. ठीक है, एक बार हम कस्टमर लाइन आइटम डिस्प्ले चेक करते हैं. ट्रांजैक्शन कोड इज FBL5N. Customer line item display. Customer is BO Bhandari. All items execute. Why it is showing this? कोई स्टेप मिस कर दिया क्या हमने? Count groups, number ranges, BCF, BP2 vendor, general ledger accounts. स्टेप्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे बैलेंसेस शो नहीं कर रहा है. सर हम भी अगर ये करने जाते हैं ना तो मुझे भी वही प्रॉब्लम आता है. नो आइटम सिलेक्टेड, नो आइटम सिलेक्टेड, लाइन आइटम डिस्प्ले होता है. ओके, वी विल डू वन थिंग. हम यहाँ से अकाउंट को हटा देते हैं. लेट्स सी. Nothing is getting displayed. FPL3N. Remove the account. All items. This is petty cash, Delhi, inventory. Accounts payable domestic. Office rent. Accounts receivable वाला यहाँ पे शो नहीं कर रहा है अकाउंट. सेल्स वाला भी नहीं दिख रहा है. Why is it happening? एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो स्टेप्स हमने सारे स्टेप्स ठीक से परफॉर्म किए हैं या नहीं. First step was uh, wait. First step was define account groups for customers. Transaction code was OBD2. यहाँ पर हमने A001 डिफाइन किया था, डोमेस्टिक कस्टमर. ओके. नेक्स्ट स्टेप वाज क्रिएट नंबर रेंजेस /n xdn1 intervals. We created the number range A1 and A2.
A1, A2. Next step was assign number ranges to customer account groups. /NOBAR A001, A1, A2. Configure business partner master. Number ranges /NBUCF intervals. We created A8 and A9. A8, A9. Next step was define groupings and assign number ranges. /NB001 does not exist. SPR. This is our line item display. अकाउंट्स रिसीवेबल डोमेस्टिक में 10 लाख रुपीस डेबिट बैलेंस है. डोमेस्टिक सेल्स आगरा इसमें 10 लाख रुपीस क्रेडिट बैलेंस है. नाउ लेट अस पोस्ट अ क्रेडिट मेमो एंड लेट अस चेक कि क्या चेंजेस होता है. /n for credit memo for customer transaction code is FB75. Customer account is 800300. Document date, let us give 27 September 2025. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि बीओ भंडारी ने 2 pieces of Honda Hornet रिटर्न कर दिए, which is 2 लाख रुपीस. So give it as 2 lakh. Text is customer credit memo. GL account will be sales. ओके, इतना कर दिया. क्लिक एंटर. अब अगर यहाँ पे कोई बैलेंस बचा होगा तो ये रेड दिखाएगा. ओके, अब यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, दैट मीन्स बैलेंस इज इक्वल टू 0. डेबिट एंड क्रेडिट दोनों भी साइड बैलेंस हो रही है. क्लिक ऑन सिम्युलेट. अकाउंटिंग एंट्री इज BU भंडारी अकाउंट क्रेडिट and domestic sales for Agra account debit. यहाँ पर भी BU भंडारी account is credited and sales account is debited. And amount is 2 lakh. Post this. Document 3001 was posted in company code HNMO. रिफ्रेश करने के पहले हमारा जो बैलेंस था पेमेंट के लिए, that was 10 lakh. Now we will refresh. Now total receivable amount is 8 lakh rupees. Okay, 10 लाख रुपीस हमें कस्टमर से पेमेंट आना था, लेकिन कस्टमर ने 2 लाख रुपीस वर्थ गुड्स रिटर्न कर दिया. इसीलिए व्हाट वी हैव टू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर नाउ इज 8 लाख रुपीस. ये क्लियर है? Yes, sir.
Now let us check GL line item display. First account is accounts receivable, domestic. Second account will be domestic sales for Agra. Copy. Click on all items, execute. ठीक है, यहाँ पर भी अकाउंट्स रिसीवेबल में टोटल रिसीवेबल अमाउंट इज 8 लाख रुपीस एंड सेल्स अकाउंट में भी इट इज 8 लाख रुपीस. अब इतना हो गया. नाउ लेट अस से दैट कस्टमर के साथ होंडा मोटर्स ने एक एग्रीमेंट किया था अबाउट पेमेंट टर्म्स. द पेमेंट टर्म्स वर ऑफ 60 days. अब इस 60 days के बाद कस्टमर हमें इस प्रोडक्ट की पेमेंट करेगा विच विल बी 8 लाख रुपीज. बिकॉज 2 लाख रुपीज के गुड्स कस्टमर्स ने रिटर्न कर दिए, तो अब बचे 8 लाख फॉर विच कस्टमर हैव टू पे. वी विल नॉट कंसिडर द डेट्स फॉर नाउ. ठीक है, पेमेंट टर्म्स एंड ऑल हम इसको बाद में देखते हैं. वी विल जस्ट से दैट कस्टमर अब बचा हुआ पेमेंट कर रहा है फॉर 8 लाख रुपीज. अगर अब पेमेंट करना होगा तो पेमेंट की एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर हमें पेमेंट आने वाला होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? वेंडर से आ रहे हैं अपने. कस्टमर से पेमेंट आता है ना. सॉरी. हमने देखी थी अकाउंटिंग एंट्री लास्ट सेशन में. क्या अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए? बैंक अकाउंट से कस्टमर रिसीवेबल, कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट. बैंक इज अ रियल अकाउंट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन. बैंक के थ्रू हमें पैसे आ रहे हैं. कस्टमर इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब कस्टमर पैसे दे रहा है यानी कि कस्टमर इज अ गिवर, देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड. यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बीयू भंडारी अकाउंट क्रेडिट. अमाउंट शुड बी 8 lakh and this also 8 lakh. ये अकाउंटिंग एंट्री समझ आ गई? यस सर. अब कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट के लिए ट्रांजैक्शन कोड इज F-28. जो बचा हुआ बैलेंस होगा फॉर 8 लाख रुपीज वो हम
इससे क्लियर करेंगे। गो टू द ट्रांजैक्शन F-28, एंटर। पोस्ट इनकमिंग पेमेंट्स, यानी कि वो पेमेंट जो हमें आ रहा है, जो कंपनी के अंदर आ रहा है। इनवॉइस डेट, लेट अस कीप इट एज 27 ओनली। क्लियरिंग टेक्स्ट इज कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट। Bank account will be 12 all zeros 1. Copy this text, paste it here. अब हमें पेमेंट किससे आना है? कौन से कस्टमर से आना है पेमेंट? BU Bhandari. So in the open item, we will select BO भंडारी। अगर वेंडर का केस होता, अगर अकाउंट्स पेबल होता, तो ओपन आइटम में हम उस स्पेसिफिक वेंडर का नाम सिलेक्ट करते हैं। बिकॉज दिस इज अकाउंट्स रिसीवेबल, इसलिए हम यहाँ पर कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे। हमें कस्टमर के अकाउंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। Click on process. Okay, before that, give the amount. Click on process open items. ठीक है, यहाँ पे DG, this is for customer credit memo. DR is 10 lakh, which is for customer invoice. Now 10 lakh is debit, 2 lakh is credit. यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 8 lakh and difference is 0. Not assigned is also 0. So we can post this. Document 8002 was posted. ठीक है, अब लाइन आइटम रिपोर्ट से हमने एग्जिट कर लिया था। सो इफ वी एंटर अगेन, हमें न्यू बैलेंसेस देखने मिलेंगे, मीनिंग कि ये सारे बैलेंसेस क्लियर हो चुके होंगे। FPL3N, बैंक अकाउंट, नेक्स्ट इज अकाउंट्स रिसीवेबल डोमेस्टिक, एंड एक और अकाउंट इंक्लूडेड था, दैट वाज सेल्स। एग्जीक्यूट ऑल आइटम्स। ठीक है, अब यहां पर कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया इन बैंक अकाउंट। अकाउंट्स रिसीवेबल में वी हैव थ्री डॉक्यूमेंट्स, कस्टमर इनवॉइस, कस्टमर क्रेडिट मेमो, एंड जो बैलेंस अमाउंट था 8 लाख का, उसको हमने क्लियर किया विथ कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज सेल्स अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट हमने कस्टमर इनवॉइस क्रिएट किया था, जिसको हमने 10 लाख रुपीज दिया। उसके बाद वी क्रिएटेड कस्टमर क्रेडिट मेमो फॉर 2 लाख रुपीज। सो द रिमेनिंग बैलेंस वाज 8 लाख, एंड ये जो 8 लाख का बैलेंस था वो हमने पेमेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू क्लियर कर दिया। इफ यू सी द स्टेटस ऑफ दीज आइटम्स, एवरीथिंग इज क्लियर्ड। समझ आ गया ये? Yes. रोहित, आपको समझा? हाँ सर। ओके, I'll stop the recording.